Okay, so hello everyone, and welcome back to another FA session. Okay, and today we'll continue our insurance claim, specifically loss of profit. Okay, in the last session we have done loss of stock. We have seen few illustrations on that. Okay, now we'll move on to loss of profit. Now, loss of profit means what? Loss of profit means loss of profit means your profit has gone down. Correct. Your profit has gone down, or your profitability has gone down. Now, when I ask you the reason for this, maybe any any sort of natural incident or accident, correct, which has which has correct, any kind of accident which has raised or resulted in the problem of working or shutdown. Okay, now if I ask you कि profit क्यों कम हो सकता है, correct, then what you will say? If I ask you कि profit क्यों कम होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर सेल कम हुई होगी. करेक्ट, सेल कम हुई होगी. और जब मैं बोलता हूं कि मेरा प्रॉफिट कम हो गया है, मैं किस पर्सपेक्टिव से बोलता हूं कि मैंने कम कमाया? जब मैं बेचूंगा कम तो डेफिनेटली मैं कमाऊंगा भी कम. करेक्ट. और मैं कमाऊं. ओके. और जब मैं कमाने की बात कर रहा हूं, करेक्ट, जब मैं कमाने की बात कर रहा हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अर्निंग, दैट मीन्स कैन आई से माय रेट ऑफ प्रॉफिट? रेट ऑफ प्रॉफिट. Okay, this sale which has gone down has a technical name of short sales. Okay, so suppose for an example, now see, whenever someone is doing a business, okay, that means what actually he's trying to do, he's trying to earn some profit. Correct. But suppose for an example, there had been any kind of accident, natural calamities, fire, or anything, okay, which has occurred on your premises, which has led down to the shutdown of the business for a little bit of period. That means for that period, your sales has been shorted. Okay, that means less amount of sale has been done, thereby reducing your profit. And whenever we talk about in insurance claim loss of profit, we talk about that this profit can also be insured. Okay, now when this profit will be insured, how much claim you'll get it? Okay, we are going to read about that. Now suppose for an example, जब मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ प्रॉफिट गिर गया, ओके, तो ये रेट ऑफ प्रॉफिट हमको मिलेगा कहां से? फ्रॉम वेयर एक्चुअली विल गेट दिस रेट ऑफ प्रॉफिट? फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स डेटा. करेक्ट, प्रीवियस ईयर में हम डेटा देखेंगे तो विल गेट अ आइडिया दैट इतना 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 मेरा जीपी का रेट है. करेक्ट, इतना मेरा प्रॉफिट का रेट है, एंड दैट हैज गॉन डाउन. सपोज फॉर एन एग्जांपल, okay, this is I'm talking about two previous year. Suppose this is 21. Suppose this is 21 and 22, and this is 22 and 23. Okay. Now what I'm going to do, I'm going to divide it into further quarters. 1, 2, 3, and 4. Okay. थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन कोई दिक्कत. So this is our quarter 1. This is our quarter 2. This is our quarter 3. This is our quarter 4. Similarly here as well. 1, 2, 3, and 4. This is our quarter 1. This is our quarter 2. Our quarter 3. This is our quarter 4. Okay. This is my current year, and this is my previous year. Okay. Now suppose in the previous year, in quarter 1, you have earned a sale of, say for example, 30,000. Okay. In quarter 2, you have done a sale of 50,000.
Okay, in quarter 3, maybe you have done for 70,000, and quarter 4, maybe you have your business has went a little bit down, and you have done only 40K. Okay, now suppose in quarter 1, in current year, in quarter 1, you have done 33K. In quarter 2, you have done 55K. Okay, quarter 3, leave it a bit, and in quarter 4, suppose for example, you have done 44K. Correct. अगर मैं इतना दिखा के आपसे पूछने की कोशिश करूं कि क्या आप बता सकते हो कि मेरी क्वार्टर 3 की सेल्स कितनी होगी या कितनी होनी चाहिए, तो आप बता पाओगे? Can you exactly point out that what should have been my quarter 3 sales just by this? So now see, yes, we can say only by seeing this. How? See, this quarter 1 was 30K, it was 33K, means 10% increase were there. Quarter 2 was 50K, so quarter 2 of the previous current year was 55K. So can I say that I have seen a trend? Okay, there is a trend in current year which says that sale will be plus 10% more. So with that logic, can I say that in quarter 3, my sale should have been 77K? Correct? 77K. And if I say you that, if I tell you that this quarter, okay, there was no operations due to, say, due to fire. Due to fire. Correct? So how much sale I have done less? What is my short sales over here? My short sales will be 77K. Correct? But if I now if I say you that, if I ask you that, if I ask you that, then also now I'm giving a different situation, that suppose this much sale has been done, okay, after fire as well, and you have earned only 10,000 over here. Correct? So what will be my short sales now? 77,000 should have been in the whole quarter, but due to some due to fire, okay, it was reduced and we could only do 10,000. So can I say that 67,000 is my short sales over here? That my sales has gone down by 67,000 for that quarter. Okay, so just try to imagine. See, now I haven't ever given you, now not yet I have provided you the formulas, not yet we have gone through book whatever is there, but this all things will be required which will help you to calculate the claim. Okay, and I have seen that a trend is there that people try to learn the formula. Okay, they try to remember it through formulas, but we won't do it. Okay, at first we'll understand everything, then for once we'll see the what formulas are there in the book, how they are done. Correct. So short sale work is done. Correct. Now if I ask you the rate of profit, so you'll say that sir, this year's financial statement, see this year financial statement. Correct. Whatever profit will be showing over here. Correct. Now suppose my profit was say for it was 20,000. Okay, my total sales is 30, 40, 70, 70, 70, 140, 140, 190. So my sale here was 1,90,000. Okay, I'm reducing the profit a bit so that a round figure will come. So suppose my profit was 19,000. So what is my profit rate of profit? Rate of profit, you will say profit by sales into 100. Correct. Profit by sales into 100. So what it will be? Nothing but your 10%. Correct. 10%.
So just for the time being now, we'll write the rate is 10%. Correct. So what is my total loss now? If my sales has gone down by 67,000 and the rate of profit is 10%, that means on this, what actual loss I have done? 10% of 67,000 makes 6700 is my loss of profit. Is that much clear? करेक्ट, क्लियर हो गया होगा. एकदम सिंपल चीज हमने बात की, एकदम सिंपल लॉजिक से. ओके, नाउ this financial statement, now I'm going to modify a bit. Okay, what I'm going to modify? Now, whenever we start our trading account, trading NPL, we start with sales. Correct. So our sales was 1,90,000. Then what we deduct some direct expenses. Correct. So whatever it is. Correct. Then what we get our gross profit, which is nothing but 1 lakh. Okay. Not 1,90,000. Let's put some figure over here. Lively level. Right. Suppose for an example, my direct expenses are 1,20,000. Correct. So what is my gross profit? Here it is 70,000. Now from here we deduct our indirect expenses. Correct. That also some are variable, some are fixed. Okay. But I am going to add, I am only going to deduct an expense which is known as standing expenses. Means these are nothing, these are the fixed cost. करेक्ट. इसका मतलब क्या होता है कि आप कुछ करो चाहे ना करो, धंधा करो या ना करो, इसके एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ द फैक्ट्री, फॉर एग्जांपल सैलरीज. Correct. For example, if you have taken any loan, then interest, no matter you're doing some business or not, but you have to pay those expenses. Correct. So I'm taking only standing expense. So suppose my standing expenses were 30,000. So what is my net profit over here now? Is 40,000. Correct. Now, if I ask you what is the rate of profit, what you will say? Sir, 40,000 is my net profit. Okay. Upon my 1,90,000 sales into 100, तो कितना आ जाएगा? बाबा रे बाबा, काफी विचित्र है. चलिए 21%. Okay. So, okay, this shouldn't be adopted. Okay, we will not do like this. We'll take standing charges as well in the financial statement. Okay, we'll take standing charges as well in the financial. So what actually has been my rate of profit? It has been 21%. Okay, so what has been my loss? 21% of 67,000, which is coming to be 14,070. So this has been my loss. Correct. This has been my loss. Sorry, loss of profit. That much profit I have lost. Correct. So what you will say, sir, इतना तो फिर यही ले लेते हैं. करेक्ट. जब आ गया लॉस ऑफ प्रॉफिट, हमको पता ही चल गया कितने प्रॉफिट का लॉस हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेते हैं ना, हो जाएगा. करेक्ट. लेकिन ये जो मैंने अभी ग्रॉस प्रॉफिट बताया ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट ये वाला भी नहीं लेना. ओके. सो एट फर्स्ट आई एम डूइंग द मिस्टेक्स एंड देन आई एम शोइंग सो दैट यू गेट इट कि एक्चुअली होता क्या. समझिए. ओके. सो what is my gross profit? My gross profit is 70,000. So एक ऊपर से बताइए, अगर मुझे सच में प्रॉफिट का पूरी कवर करवाता, मैं इंश्योरेंस करवाता, तो मुझे कितने का करवाना चाहिए? 70,000 का. करेक्ट. आई शुड हैव डन इंश्योरेंस ऑफ 70,000 रुपीज, ताकि मेरा कितना भी लॉस होता पूरा कवर हो जाता.
करेक्ट। लेकिन क्या होता है ना, इसमें एक चीज होती है, ओके, सम केसेस आर देयर, यू विल फाइंड इट इन द बुक एज वेल, और यही इस टाइप ऑफ सम्स के थोड़ा सा पार्ट बनता है कि जहां कंपनी कहती है ना कि चलिए एक चीज मुझे ये बताइए, अगर मैं इस नेट प्रॉफिट का इंश्योरेंस कराऊं तो क्या होगा पूरे का? तो चलिए, मेरा जो प्रॉफिट लॉस होगा वो तो मेरे को मिल जाएगा, करेक्ट, लेकिन ये स्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो ये मुझे पॉकेट से देने पड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि दिस आर द फिक्स्ड कॉस्ट। सो बेटर क्या है कि हम ग्रॉस प्रॉफिट को ही इंश्योर करवाए, क्योंकि उसके बाद जो खर्चे आते हैं वो सारे फिक्स्ड कॉस्ट आते हैं, करेक्ट, तो वो मेरे को देना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि हम ग्रॉस प्रॉफिट, तो पता है कंपनी क्या करती है बीच बीच में, समटाइम्स व्हाट दे डू, दे से दैट we will not insure all the amount, okay, but what we'll do now, we'll bear some expenses, okay, कुछ loss will bear. So suppose among this 13,000 they said that 10,000 we will bear, but for the rest 20,000 we'll insure it, and this is uninsured. And this is what in the book you'll find out: uninsured standing charges and insured standing charges. करेक्ट। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा प्रॉफिट का रेट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर मैं आपसे अब पूछूं कि प्रॉफिट का रेट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? So 50,000 divide by नहीं 50,000 की, 50,000 की, इस 20,000 को भी लेना पड़ेगा ना जो इंश्योर्ड है, क्योंकि हम इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, तो जो हम इंश्योर्ड करवा रहे हैं उस हिसाब से मुझे ये रेट चाहिए, ताकि मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाऊं कि मेरा लॉस हो कितना रहा है। तभी तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से, देखिए ये प्रॉफिट ना मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए नहीं निकाल रहा हूँ, ये सिर्फ क्लेम कैलकुलेट करने के लिए निकाल रहा हूँ। तो मैं क्या चाहता हूं कि कितना मैं इंश्योर करवा लूं ताकि मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट कवर हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या लेने पड़ेंगे? एक तो मुझे अपना प्रॉफिट वाला पार्ट लेना पड़ेगा 40,000 का, प्लस जो मैंने इंश्योरेंस करवा रखा उसको भी तो लेना पड़ेगा ना। हाँ, ये भी तो मेरे रेट में आएगा। तो व्हाट इज द टोटल सेल्स? 1,90,000, तो 70,000, 60,000, 60,000 divided by 1,90,000 into 100. 31.5 ऐसे कुछ आ रहा है ना? 1,90,000 into 100. So 31.58%. 58 ना, so let's make it 32%, तो कुछ है भी नहीं। So now our rate is 32%. What is this rate actually? This rate is nothing. This rate are my insurance, is the rate for my insurance, that this 20,000 plus this 40,000, this is what we want it to be covered by our insurance policy, correct? Better क्या होता, what would have been the best if we would have insured this whole 70,000, तब नीचे तक जाना ही नहीं पड़ता, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट रेट से ही काम चला देते हैं। वी कुड हैव डन आवर वर्क with gross profit rate only, but the problem is that wherever standing charges are there and there are some insured and some uninsured, then this what insurance company will say कि you haven't done the full expenses, correct, so you have to bear something, so according to that we'll calculate the rate of profit and the loss of profit. So what rate it came to 32%. Okay, so what will be, what profit we have lost 32% of 67,000, which is 21,440 is my actual loss of profit. Okay, so what I have done to calculate rate of profit, what I have done, I have taken net profit plus insured standing charges whole divided by sales into 100. देखिए आपको फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है अगर आप समझ गए। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट देन यू डोंट इवन नीड दिस फॉर्म। ओके, ये तो हो गया हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट।
Now actually the loss of profit depends upon three factors. Okay, one is amount of short sale and the rate of profit. Second will be additional expenses. What additional expenses? Now suppose for an example, ये जो quarter में हमारा loss हुआ था, in the quarter in which we had this loss, okay, the quarter in which we had this loss, okay, this 10,000, what we were to do was because of those additional expenses which you have incurred. क्योंकि एक बार आग लगने के बाद, correct, then again it might be possible that we'll take another new place in a rent, correct, we'll work out some more things so that we can work better, correct. तो क्या हो रहा है additional expense, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, the expenses which had been incurred to bring back the business to normal condition. Okay, I'm talking about those additional expenses. That means that additional expenses due to which I was able to do 10K even in the quarter where fire had occurred. Okay, so whenever we talk about additional expenses, na, at first we have to check actual expenses. Okay. Now, suppose for an example, for this 10K sales, what additional expenses were done? Say, for example, it was done for 6,000. I have incurred 6,000 rupees extra for this 10K sales. Correct? Now, if I ask you, अब हम क्या कैलकुलेट जा रहे हैं? We are going to calculate GP. Why GP? क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं एक्चुअली 6,000 खर्च करके जो हमने 10,000 बेचा, उसमें मेरा जीपी कितना है? क्या मेरा वो जीपी 6,000 से ज्यादा है? क्योंकि अगर मैं 6,000 खर्च करके 5,000 कमाता हूं तो बेटर होता मैं 6,000 खर्च ना करता, करेक्ट. लेकिन अगर मैं वो 6,000 का बचा के अगर मैं 10,000 कमा सकता हूं तो वो मेरे लिए प्रॉफिट, करेक्ट, वो मेरे लिए बेनिफिट है. What I'm saying is that suppose if I incur 6,000 rupees additional expenses for to start the work again, okay, and I'm earning only 5,000 rupees, so it's better I could have avoided that 6,000 rupees cost, correct, because it is only giving me an income of 5,000, correct. But if I have expended, say for example, 6,000 rupees and I have incurred, I have earned, I'm not talking about sales, I have earned means revenue, my profit. If I have earned 10,000 rupees, then that is more benefit to me, correct. So so देखिए यहाँ पे मैं what I'm saying, this profit will definitely be borne by the insurance company, this profit loss. But will they bond this additional expenses also which I have done so as to start my operations? That they will give this as well, provided what the actual expenses you have done should be your GP or your percentage of profit should be more than that expenses. Okay, so what I'm saying, so what expenses I have done, what was the sale that you have did? 10K, 10,000. Okay, what is my GP percentage? 32 by 100. तो कितना आ जाएगा? 3,200. 3,200. 3,200. तो क्या ये अच्छा हुआ? We have done an expense of 6,000 and we have only earned 3,200. Is it good? It's not good. So in this case, additional expenses will not be included. But suppose for an example, okay, एक second दीजिए, I have to check one thing. Now, suppose if I change that, I was able to do a sale of 30,000. I was able to do a sale of 30,000. तो कितना आ जाता है? ये आ जाता 9,600. करेक्ट. नाउ इज इट बेनिफिट कि मैं 6,000 का खर्चे करके 9,600 आई एम अर्निंग 9,600. डोंट यू थिंक इट इज बेटर फॉर मी? Yes, sir. Correct. So it is better for me. In this case, this whole actual expense of 6,000 will be borne by the insurance company. Okay. But this, क्या आपको लगता है 6,000 पूरा वो बियर कर लेंगे? नहीं करेंगे. Why? Because see, यहाँ पे भी आपने 70,000 पूरा इंश्योर नहीं करा था. आपने बोला था कि विल बियर सम रिस्क.
will bear a loss of 10,000 which was uninsured. So he'll say that will not allow you full, will allow you proportionate expense. What will be the proportionate expense? I have incurred 6,000 rupees, okay, to have a profit of 9,600. And what was my total profit? What was my gross profit? 70,000. Correct. Means what I'm trying to say, for this 70,000 on this total sale of on this total profit of 70,000, 9,600 of profit has been earned due to 6,000 rupees. Correct. So what is the proportionate expense? कितना आएगा? So it will come to 822.86. So we'll make it 823. Correct. ये आ रहा है ना? गलत तो नहीं किया मैंने? चलिए. So what will be allowed will be lower of the three. Lower of the three will be allowed. So what is the lower amount over here? 823. Correct. So this amount will be borne by the insurance company. Okay. So now what two things that we have got? One, we have got the profit which they are going to bear. Second, we have got the additional expense which they will bear. Okay. Don't worry if you are right now, if you are a bit confused, if you are not going to get it, don't worry. Once we move on to the illustration with 2 or 3 illustrations with practice, it will be very easy for you. Okay. Then you will come to know actually what I am doing. Okay. Because if I would have directly moved you to the formulas, then it would have been a disaster. Now, what will be the claim that will be admitted? What claim will be admitted? Correct. So for this, there are two views. One is what policy amount you have taken and which policy should have been policy needed. Correct. Why? Because we know ना, if your देखिए एक चीज तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना in loss of stock as well, that if your insurance is less and your loss is more, correct, or if your loss is more and insurance is less, then we get a proportionate amount. Correct. हमको proportionate amount में मिलता है. हमने अगर हमने पॉलिसी ले रखी है, suppose for example the policy which you have taken is of 70,000, correct, and we have got a loss of only 60,000, then it is very simple that we'll get 60,000. Correct. But suppose I have taken a policy of 60,000 and I have incurred a loss of 70,000. So how much is the claim that I will get? I'll get 60,000 by 70,000 into the sales, whatever the general clause which you have read. Correct. So that only we are going to check. For example, suppose he has taken a policy of 70,000 तो already था ना, 70,000 तो नहीं ले सकते, उससे कम लेना पड़ेगा. Suppose he has taken a policy amount of 60,000. It is taken, but what was needed? ये कैसे पता चलेगा? You have to calculate the profit. कितना प्रॉफिट आएगा उतना ही नीडेड होता. तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए, let's come back to the graph. The profit will be checked. So see, we are trying to dominant color लेना पड़ेगा. Okay, we are trying to calculate this total quarter's profit. Okay, now how has to be done? How it has to be done? It will be done with the help of from here till 1 year. ये एक साल है ना? 2 quarter over there and 2 quarter over here. Correct. We have to take total sales of this period. Total sales of this period. What is the total sales? 70 plus 40 plus 33 plus 55. 70 plus 40 plus
33 plus 55. It's coming to be 1,98,000. This is my total sales. Correct? तो we are trying to calculate कि इसके बाद सेल्स कितनी होगी. So what will be that? 1,98,000 plus 10% or not? सर एक बार और. मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे इस वाले ब्लॉक का मतलब एक समझिए जहां पे डेट ऑफ फायर लगा है, दिस इज द डेट ऑफ फायर. इसके बाद का अगर मुझे इसके बाद का मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? इसके पहले से लेके ठीक 1 साल की मैं सेल पकड़ूंगा. जो ये पीरियड देखिए, 2 क्वार्टर इधर 2 क्वार्टर इधर, मतलब 4 क्वार्टर, मतलब 1 साल हो गया. इसका टोटल सेल्स निकाल लेता हूँ. और हमने देखा है कि हमेशा 10% का एक ट्रेंड देखा है हमने. करेक्ट? तो मैं बोल सकता हूँ कि इस साल 1,98,000 प्लस 10% सेल्स हुई होगी. डेट ऑफ फायर के बाद से होनी चाहिए. हाँ बोल सकते हैं. हो सकता है ना? वही करना पड़ेगा. सो व्हाट विल डू फॉर दिस पीरियड, इट विल बी, कहाँ लिखूं, कहाँ जाऊं? ओके, सो हियर द सेल्स विल बी 1,98,000 plus 10%. Why? Because this is the trend. Okay, so 1,98,000 into 10. So it will be 2,17,800. This is my sales. Correct? Okay, so this was my sales, 2,17,800. What was the gross profit rate we have calculated? 32%. 32%. कितना आएगा? 32%. So it's 6,9,696. करेक्ट? तो इतना मेरा प्रॉफिट हुआ पूरे पीरियड में, होता नॉर्मल प्रॉफिट. तो आपको नहीं लगता मुझे इतने का इंश्योरेंस करवाना चाहिए था? आई शुड हैव टेकन इंश्योरेंस ऑफ दिस मच ऑफ अमाउंट सो दैट एवरीथिंग वुड हैव बीन कवर्ड. करेक्ट? बट व्हाट आई हैव एक्चुअली टेकन ओनली 60,000. तो क्या मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करना पड़ेगा. वो कैसे करते हैं अपन? वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? 9696 divided by 60,000 into 100. नहीं, ये क्या, तो परसेंटेज निकल जाएगा. हमने ये लॉस ऑफ स्टॉक में कर रखा है जब पॉलिसी निकालते हैं. यू हैव डन दिस इन लॉस ऑफ स्टॉक केस. कहाँ लिखा था मैंने? सी, जनरल क्लॉज में वी यूज्ड टू डू एक्चुअल लॉस और पॉलिसी वैल्यू, लोअर ऑफ एक्चुअल लॉस और पॉलिसी वैल्यू. ओके, लेकिन क्या यहाँ पे जनरल क्लॉज हम या एवरेज क्लॉज लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते. हियर यू हैव टू कैलकुलेट. Now see how the proportionate will be calculated. What is the total loss that we have incurred? See, we have incurred a total loss of 823 over here. Correct? And 21,440 over here. 21,440 loss over there and 823 loss over there. Means all total 22,263. So this is what is the total loss that I have incurred? 22,263 into what is the policy amount I have taken? 60,000. What should have been the policy? The policy should have been 6,9,696. आपको नहीं लगता प्रोपोर्शनेट निकल जाएगा कि ये पूरा लॉस तो कवर नहीं करेंगे ना ये, क्योंकि जब पॉलिसी अमाउंट ही आपने कम लिया है तो पूरा लॉस कैसे कवर करेंगे? दे विल अलाउ यू प्रोपोर्शनेट अमाउंट. सो कितना आएगा ये? इनटू 60,000 डिवाइडेड बाय 6, 19,165.80. 19,166 कर देते हैं. करेक्ट? सो दिस इज द लॉस दैट दे विल गिव यू. You can claim. इतना actual loss was this. This was our actual loss. ठीक है.
If you have got only 10% of it, na, that's more than enough, because once you see the formula, okay, this will redirect you to everything. See, now I'll see standing charges. We have discussed this. Fixed overhead charges. Indemnity period we'll discuss. Don't worry, indemnity will discuss. Standard turnover. See, the turnover during that period in the 12-month immediately preceding the date of damage, which corresponds with the indemnity period. कौन सा वाला जो हम कर रहे थे कि जिस दिन डेट ऑफ फायर उससे पहले का 1 साल. Okay, 1 year just before the date of annual turnover period of 12 months immediately before the date of damage. Net profit, gross profit. See, that if gross profit is 12,000, okay, sales, non-standing charges, and all standing charges are of 15,000. Okay, insured standing charges are of only 14,000. Correct. So see how they have calculated the gross profit. 14,000, that is insured standing charges divided by all standard charges into gross profit. You know, they have calculated the total gross profit. Uninsured, sorry, insured by uninsured into the gross profit that has occurred. We'll get the gross profit of taking this example. But what I have directly shown you, I have directly shown you a net profit formula. Okay. See, calculation of claim under loss of profit. Okay, this is what I was explaining you without the formula. See, what are the first thing then? Find out the rate of gross profit after considering the trend of business. We did that only, correct? From trend, we have calculated the gross profit. Then find out the short sales, that is standard turnover minus actual turnover of the period of disclosure, means including the trend. If trend was itna tha, correct? From that example, it was very clear that trend was of 10% increase. So agar usme 70,000 hua tha, तो here should have been 77,000, correct? And actual what we did was only 30,000. So our short sales was 40,000. Find out the gross profit on short sales. This is what we did over here. See, let me open that as well. See, at first we calculated the gross profit. See, we calculated our gross profit portion, correct? Then we calculated our short sales. How? Kitna hona chahiye tha? See, if the same quarter in the previous year has 70,000 and 10% trend is there, then 77K should have been done, correct? And suppose from that only you are able to do only 10K. So what is your short sales? 67,000. Your rate we calculated 32%. So you have found it out. Gross profit on short sales, correct? Let me bring this closer. Give me a second. Okay, see, we have founded the gross profit on short sales. Now see, find out the amount admissible for additional expenses. See, actual expenses, gross profit on additional sales generated by additional expenses. See, additional expenses. See what we did. Net profit plus insured standing charges divided by net profit plus all standing charges, or gross profit of annual turnover जो हमने लिया था, divided by gross profit of annual turnover plus uninsured standing charges into additional expenses. Okay, two formulas are there, but we only took one over here. See, this was our, see, this 60,000 was the additional expenses. This is our gross profit on additional sales generated. This is our total sales. ठीक है, यही हमने किया था, बस we haven't yet taken this formula. Now see, add 3 and 4 from the total, deduct saving in any insured standing charges.
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडिमनिटी, ओके, द रेस्ट इज ग्रॉस क्लेम, वही हमने किया था। See, वही हमने बहुत पहले कर दिया था। अगर अगर होना चाहिए था, इफ इट शुड हैव बीन 77K एंड वी आर एबल टू डू 10K, so our short sales was only of 67K. Okay, and on that whatever value we have got plus the additional expenses, proportionate additional expense, this amount, this is our gross loss. See, gross claim means our loss divided by policy value into gross turnover and actual turnover. ये खिचड़ी बन गई क्या दिमाग? थोड़ी 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 थोड़ा तो दिमाग पे जोर पड़ेगा। बहुत सारे फॉर्मूले हो गए ना तो नहीं नहीं, कुछ कोई फॉर्मूला नहीं, कोई भी फॉर्मूला नहीं, इसको फॉर्मूला से करना ही नहीं। इस इलस्ट्रेशन को करते हैं, अभी समझ में आ जाए, करने से ही क्लियर होगा। मैं बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि क्या पागल हो गया, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या जरूरत है, करेंगे तो समझ। रिमेंबर इन दिस in FA na, when you don't understand anything, that means you are in a good path, आप सही रास्ते। और FA में ना, this is a very basic thing in FA, don't ever try to see the sum, इसीलिए बोलते हैं ना FA में आप प्रैक्टिस करिए, देखिए मत, देखने से कुछ नहीं, ठीक है? तो मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाया ही। चलिए, have give a reading, give a reading, then we'll start the reading. पढ़ो, चलिए। From the following particulars, prepare a claim of loss of profit under the consequential loss policy. Date of acquire 30 June 2013. Period of indemnity was 6 months. मतलब जितने टाइम तक ये बिजनेस इफेक्ट हुआ था उसको पीरियड ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं। ओके, फॉर द पीरियड विच बिजनेस हैज बीन इफेक्टेड, लाइक इन आवर एग्जांपल व्हिच वी टेक वाज पीरियड ऑफ इंडेमनिटी वाज ओनली 3 months, sorry 4 months, because we are taking each quarter. See what are the sum insured 25,000. Turnover for the period for the year ended 30 June 2013 was 1 lakh. Net profit for the accounting year 31st March 2023. This is your previous year. Okay, this is of your current year till date. Standing charges for the accounting year ending 31st March 2013. This is previous year. Turnover of the year ending. This is previous year. Turnover of the indemnity period from 1/7/2013 to 31st/12/2013. Turnover for the indemnity period from 1/7/2013. ये था current year का. Okay, where it has been the sales. A turnover from the previous, ये पिछले साल का sales. Turnover was 55. Now remember ये क्या है? Now if I draw the chart again ना, so हमने जो पढ़ा था Q3 में कितना सेल हुआ था? This is that sale 55,000. Okay, अब Q3 में कितना बोला? सिर्फ और सिर्फ 28,000 का ही सेल हुआ, 28 की, और इंक्रीज कितना है? 10%. सो कितना हो जाना चाहिए था? 55 into 10%. Plus it should have been 60,500 should have been correct. हुआ कितना है? 28K. तो शॉर्ट सेल्स कितना है पता चल जाए, समझ में आया? नाउ कैन यू कंपेयर इट विथ माय ड्राइंग व्हाट आई डिड? yes sir. I will write it and calculate it. Turnover for the year has shown a tendency to increase 10% over the turnover of the preceding year.
So first we'll do calculation of short sales. कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट्स. अब देखिए कितना हुआ है हमारा टर्नओवर. No, sorry, for past year. So we'll write last year indemnity period turnover. Indemnity period मतलब जो आग लगी थी. In our example, you used to take quarter three, but every time it won't be in quarters, na? So indemnity period turnover was 55. okay. Then there is a trend, correct? Add 10% increase, which is trend. So it will be 5,500. 5,500. 5,500. So what should have been? What should have been my what I can write? बेटर कुछ ना लिखे लेकिन एक वर्ड में देता हूँ. रुकिए. सेल probably what should have been 60,500. 500. But what is my actual sales? Less actual sales is 28,000. So whatever the difference is my short sales, कितना आएगा difference? 28, 32,500. 32,500. 32,500 is my short sales. सर क्वेश्चन. कुछ सर यहाँ पे 1 अप्रैल टू फर्स्ट मतलब 1 अप्रैल टू 30 जून वाला नहीं लेंगे अमाउंट. नहीं, वो लेना ही क्यों है? हम क्या क्या कंपेयर करते हैं? डायग्राम याद करिए. चलिए 6 महीने का था ना, तो यहाँ पे हम 6 महीने का बनाते. ठीक, ये डायग्राम देखिए. ये 2 साल है, ये 6 महीने और ये 6 महीने. ठीक है. मान लीजिए इस 6 महीने में आग लगी है, करेक्ट. और इस 6 महीने का टर्नओवर दिया हुआ 55 और 10% का इंक्रीज है इस साल. तो कितना हो जाना चाहिए था इस साल? 55 प्लस 10% हो जाना चाहिए था. हुआ है 28 के, करेक्ट. तो कम हुआ ना. यही तो शॉर्ट सेल्स है. हम इस पीरियड और इसी पीरियड को कंपेयर करेंगे ना. ये देखिए, इसको और इसी को तो कंपेयर करेंगे. इससे इसको नहीं कर सकते और इससे इसको नहीं कर सकते. जी ठीक है सर. यही तो शॉर्ट सेल्स निकालते हैं हम. अगर अपने एग्जांपल पे जाऊं मैं, ये देखिए हम क्या कंपेयर कर रहे थे. वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग Q3 एंड Q3. जब यहाँ 70 के था एंड ट्रेंड वाज 10%, दैट्स व्हाई आई सेड इट शुड हैव बीन 77 के. इसलिए मैंने टोटल 77 के डाला. और if I have done actually 10K, so if I reduce it, I'll get 67,000 is my short sales. और वही मैंने यहाँ किया. अरे प्रभु. ठीक है सर. ठीक है. हम हमेशा उसी पीरियड का पिछले साल का कंपेयर करते. चलिए, शॉर्ट सेल्स निकल गया. अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा शॉर्ट सेल्स के बाद? व्हाट वी कैलकुलेट रेट ऑफ प्रॉफिट. रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट लिख देता हूं, कोई बात नहीं. व्हाट विल द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? रिमेंबर मैंने क्या लिखवाया? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बाय सेल्स. यहां भी करना है. व्हाट इज द नेट प्रॉफिट? नाउ सी, नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31st March 2013. 6250. 6250. 50. और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है क्या इसमें कुछ? स्टैंडिंग चार्जेस हैं इंश्योर्ड 14,250. और किस ईयर का है? इसी साल का है? नहीं, प्रीवियस ईयर का है. एक सेकेंड. 31st March 2013 इसी साल का है. 31st March ना, पिछले साल. पिछले साल का. पिछले साल. तो क्या करें? नहीं लेंगे. नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? नहीं लेंगे तो क्या? इस साल का टर्नओवर कितना आया है? 1 लाख, करेक्ट. और नेट प्रॉफिट बता रहा है 62,500.
तो इसी से कर दे क्या? इसी से कर दे या कुछ और करे? कर सकते, बट सर एडिशनल एक्सपेंस भी तो सकते हैं ना उसमें। नहीं, एडिशनल एक्सपेंस की बात तो बाद में आएगी ना। हम्म हम्म तो फिर ले सकते हैं जो बैलेंस अमाउंट है वो। या फिर ऐसा करे कि एज्यूम कर ले कि पिछले साल था तो इस साल भी इतना ही होगा। क्या कर ले, ऐसा क्या कर ले जिंदगी में कि कुछ हो जाए? सर अज्यूम मेरे हिसाब से तो अज्यूम तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अ, जो पिछले साल का स्टैंडिंग चार्जेस टर्नओवर। मतलब क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। ये तो हर साल सेम हाँ। ही रहेंगे ना, तो एज्यूम कर लेते हैं। ओके, हम्म see, what I am saying is that standing charges means what? Our fixed overhead cost. Will it हम्म change? It will never ever change. धंधा करो ना करो ये तो सेम ही रहेंगे. So what is the formula that we used to write? Net profit प्लस स्टैंडिंग, insured standing charge. थर्ड स्टैंडिंग ये बोलना सीखिए वरना गलती होगा. Insured standing charges. We assume it to be insured. Assume की spelling गलती थी ऊपर, avoided. And sales सेल्स इनटू 100, into 100. Net profit was 6 to 6250. 50. In standing charges were 14,000. सेल्स was, सेल कितना हुआ था? 1 लाख. तो 6250 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाई, 6 to अरे 6। 1 लाख 20.25%. 8 minutes, 50 plus 14,000 divided कितना है? 20.25 भी तो आना चाहिए. टर्नओवर इंडेड 30 जून 2013 और फायर लगा था 30 जून 2013. इसी साल का टर्नओवर. क्या हुआ आपको? 20.25 नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो बताइए. हाँ आ रहा है 20.25 रेट। 25। 20.25%. हम्म करेक्ट. नेक्स्ट में हम क्या करते हैं? एडिशनल एक्सपेंसेस. But anywhere additional expenses informations are given? No, नो। not given. Correct. So no additional expense. So what will go? Will directly go to gross claim. Okay, this is the process you have to do. पहले short sales, gross profit. Okay, then you have to calculate gross claim. Gross claim will be what? What is my gross profit on sales which short sales? ये निकालना पड़ेगा ना, तभी तो लॉस पता चलेगा. शॉर्ट सेल्स, और शॉर्ट सेल्स आर कितना आया था? 32,500. हम्म And my GP rate is 20.25. So what it is coming? Gross profit कितना आ रहा? 6581 6,581. 581। और कुछ है भी नहीं. And policy value is also 25,000. तो ज्यादा ही करवा रखा है. तो this will be my gross claim. और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ क्लेम के बारे में ही पूछा है. करेक्ट. They have only asked prepare a claim for loss of profit. So this will be my claim. Claim amount will be of 6581। Correct. Any doubt? Yes, please. करते करते क्लियर होगा. ठीक. It will practice and it will clear. Sir- Okay, so there had been two silly mistakes. One is that, see, insured charges are 14,250, not 14,000. 14,250. And this sales will be of previous year, na? This sales will be of previous year.
this because this sales is not yet completed. Correct? Even in our example as well, what we did, see, we were calculating financial statement of previous year. So we took previous year sales and we calculated it on previous year. So sales, I'll write it previous. Okay, and here also it will be 99,000. That is previous. This sales will be of previous. So it will come around 2 point. कितना रहा? 20.70. 20.70%. So accordingly, this will also change. 20.70%. कितना रहा? 6.728. 2. 8. Okay, so these are the things. Just rectify it once. Okay, we'll do one more illustration, which will have some more adjustments to them. Okay, so let's read out the illustration and we'll solve it. There was a serious fire in the premises of Messrs. ABC on 1/9/2013, 1st of October. Sorry, September. Their business activities were interrupted till 31st December 2013. So that means indemnity period was of September, October, November, and December, 4 months. When normal trading conditions were re-established, Messrs. ABC are insured under the loss of profit policy for 42,000. The period of indemnity being 6 months. Okay, period of indemnity is 6 months. You are able to ascertain the following information. Achha. The net profit for the year 31st December 2012 was 20,000. Correct. Annual insurable standing charges amounted to 30,000, out of which 2,000 were not included in the definition of insured standing charges under the policy. Okay. The additional cost of working in order to investigate the damage caused by the fire amounted to 600, but for the expenditure, the business would have to shut down. But for the expenditure, the businesses would have to shut down. मतलब ये additional expense ये नहीं करते तो business shut down हो जाता. चलिए सही है. The savings of the insurance standing charges consequences to the fire amounted to 1500. 1500 का हमने saving कर लिया. इस ये खर्चे की वजह से 1500 का saving. चलिए. The turnover for the period of 4 months ended 30th April, 30th August, 31st August, 31st December in each of the years 2012 and 13 are as follows. 30 April, 31st August, 31st December. Okay, 4 month है ना तो 12 months करके. Okay, you are required to compute the relevant claim under the terms of loss of profit policy. Now see, fire was on this quarter, correct? Now see, this is the quarter of 31st December बोला ना, Jan to April, January, February, March, April, Jan to April, May, June, July, August, and first September to December, correct? And fire occurred on 1st September and business were interrupted till 31st December. So this is the period when fire had occurred in the year 2013, correct? तो यहीं से हम short sales निकाल सकते हैं, correct? 95,000 was the total sales. यहाँ पे कोई trend की बात नहीं की, they haven't talked about trend. So what should have been? What is the actual sales? 15,000. So short sales is 18,000. Clearly see, correct? Trend की तो कोई बात की नहीं है, तो वो trend की बात करेंगे नहीं. करेक्ट. जहाँ ट्रेंड की बात होती है वहां पर हम निकालते हैं कि कितना होना चाहिए. यहाँ ट्रेंड की बात नहीं है तो जितना है उतना ही होना चाहिए था, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए था. करेक्ट. तो शॉर्ट सेल्स will be what? Standard turnover from 1/9/2012 to 31st/12/2012 was 95,000, but actual turnover 1/9/2013 to 31st/12/2013 ये लेस कर देते हैं 15,000. So what is the short sales? 80,000. सर हम्म. हाँ ठीक है.
क्या ठीक है? नहीं कुछ नहीं, नहीं ठीक है। सर बुलाया तो पूछना तो पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सर नहीं, बुलाया तो पूछ, नहीं नहीं वो नहीं, मुझे पूछ। 1500 लग रहा था डिटेल से, तो मैं वही सोच रही हाँ तो इसका भी इलाज है ना, मैं हर प्रॉब्लम सोल्यूशन बताता। चश्मा थी। लगाइए, है तो नंबर बढ़वाइए, लगा हुआ है। तो बढ़वाइए नंबर। चलिए, ठीक है। शॉर्ट सेल्स। नाउ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। आप बताएंगे फॉर्मूला क्या लिखते थे हम? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय चार्ज सेल इनटू 100, सेल्स प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर इनटू 100। बच गए। नाउ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दे हैव सेड समथिंग, इसको पढ़ के बताइए क्या करना है। से 28,000 लेंगे। यार गलती तो करिए, प्रॉफिट कितना था पिछले साल का? 20,000। 20,000। सेल्स कितना था टोटल मिला के? इसको ऐड कर दे तो मिल जाएगा ना? कितना आएगा बताइए? 80, 60, 1,40,000, 1,40,000, 1,50,000, 90, 2,40,000। गलत हुआ तो मैं गया। 2,40,000। गलत मैं बहुत कम होता हूँ, ऐसा बहुत कम होगा। जब आसमान में बादल बादल गरजते हैं तो कितना आएगा? इसमें मैं होशियारी नहीं करूंगा, आप ही बताइए। 48,000 divided by 2,40,000 into 100. 48,000 आया तब तो 20%। 20%. नाउ क्या करना है अपने को? जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स 80,000 into 20%, it will be 16,000. Okay. Now additional expense is here. Ladies and gentlemen, boys and girls, additional expenses are here. Okay. Actual cost 600. Actual cost 600. Now see, savings was of 1,500. Okay, savings was of 1,500. So can I say savings 1,500? And next is what we write? Amount admissible for additional claim will be, see, net profit plus insured standing charges अरे ये तो वही वाला लग रहा है ग्रॉस प्रॉफिट वाला, जल्दी से सेल बोल के हीरो बन जाती है, ऐसा मत करिएगा। नहीं वही है, into additional एक्सपेंसेस ये तो लेना ही पड़ेगा ना, इसी का तो प्रोपोर्शनेट करते हैं, डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस all standing charges, all standing charges. Why? Remember, wherever there will be some standing charges का issue आएगा ना, some insured है some uninsured है, there this formula has to be applied. Now see, 30,000 they have said that they are insurable, out of which 2,000 तो definition में नहीं आता insured standing charges. That means 28,000 is insured and 30,000 is total. Correct? There is a difference, so we calculate a proportionate of that. Net profit was about 20,000. Insured was 28,000 only, but
all standing charges are of what amount? 30,000. हम्म And additional expense you have done it of 600. सेविंग्स नहीं लेंगे? सेविंग्स क्यों लेंगे? सेविंग्स को लेना ही क्यों है? वो तो दूसरा नहीं नहीं, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंस। वो अलग चीज था अच्छा जो मैंने किया था, उसमें हमने स्टैंडिंग चार्जेस को तो लिया ही नहीं, इसीलिए सेविंग्स वाला पॉइंट आया था, जो कि नेक्स्ट वाली इलस्ट्रेशन में। ठीक है सर, ये आया कित 576। 576। कोई बात नहीं, लिखा वही है, आगे पीछे हो गया। तो नाउ टोटल क्लेम विल बी व्हाट? टोटल क्लेम विल बी व्हाट? GP on short sales was 16,000. Add admissible additional expenses 576. ओके, कितना आ गया? 16576। 16,576। ना सी, ये क्या पूरा लॉस हो गया? नहीं हुआ, सेविंग्स आया था ना एडिशनल एक्सपेंसेस में, लेस लेस सेविंग्स ऑफ 1500, तो कितना आया? 15076। 15076। दिस इज आवर क्लेम। समझ में आया सेविंग्स कहाँ गया? अगर यहाँ पे अगर अगर इस एग्जांपल्स में इंश्योर्ड चार्जेस का इतना डिफरेंस ना होता और सेविंग्स वाली बात बोली होती, तो हम क्या करते हैं, हम सेविंग्स के ऊपर ग्रॉस परसेंट, एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर जीपी निकालते और फिर तीनों में से कंपेयर करते कौन सा लो है, एक्चुअल कॉस्ट या सेविंग्स या प्रोपोर्शनेट, तो हम उसको करते। ओके, देयर इज ओनली वन मोर एग्जांपल इन योर मैथ। ओके, बट व्हाट एल्स, आई थिंक दैट इफ आई विल डू दैट, देन व्हाट यू विल डू? ओके, अच्छा इसमें और भी कुछ निकालना था क्या? Relevant claim under the term. Sorry. It is not yet completed. Sorry. So this is not our claim. It is actual our gross claim. Correct? Gross claim. Policy amount was of 42,000. So to calculate proportionate, na? It is have to calculate. Apply average cost. That will also work. Apply average cost. क्या करते थे हम? Policy amount by GP on annual turnover into gross claim. ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि अगर 40,000, ओके, नाउ जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर क्या था? व्हाट यू हैव टू डू? देखिए, इस पीरियड में आग लगी है, करेक्ट? इस पीरियड में आग लगी है, तो ये 4 महीने का पीरियड है, मतलब इसके बाद के जो 4 महीने होंगे, ये दो मतलब 8 और एक ये, यही होगा ना 1 साल। ये एक 4 महीने का, ये एक 4 महीने का, ये एक 4 महीने, ये 12 महीना होगा कि नहीं? यस सर। तो टर्नओवर क्या है? टर्नओवर ऑफ 12 मंथ कितना आ रहा है टोटल? 95, 70, 80। 2,45,000। 95 और क्या था? 70 80। 70, 80। 70 प्लस 80, 2,40,000। 45,000। 2,45,000। 45,000। ठीक है, इस पे हमको जीपी लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 2,45,000 इंटू जीपी रेट व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड 20%, 20%। कितना आ जाएगा? 49,000। 49,000। तो नाउ सी, 49,000 का आपका टोटल प्रॉफिट आपने पॉलिसी से 40,000 के लिए,
तो क्या आपको पूरे के पूरे 15076 पे क्लेम मिलेगा? नहीं मिलेगा, सर प्रोपोर्शनेट पॉलिसी मिलेगा। अमाउंट 42,000 का है, है ऊपर ऐसा पॉलिसी अमाउंट 42 का है। ऐसा भी होता है क्या? होना नहीं चाहिए। चलिए कितना आ रहा है बताइए। Okay, why 42। we are applying this average cost? Now see, we have discussed this. Okay, that if you're on your annual turnover, if your gross profit should have been 49,000, you have taken up only 42,000. So why will they cover this whole amount? They will give you proportionate of that only. Ki if on your 49,000 amount, if you have insured for only 42,000, then what should be paid on 1,576 amount? कितना आ रहा है? 12, एक मिनट, सर ये है 12,922। 12,900 will be the claim. Okay, you have to practice it. Okay, with practice everything will be correct. So with this we end our chapter, provided if you are able to do the illustration 35. If not, that in the next session we'll pick up illustration 35 and then we'll move ahead. Okay, so for this session I'll keep it up to here. I'll see you in the next session.